हेलो डियर फ्रेंड्स, बिजनेस हेल्पलाइन को आपण मान को बहुत बहुत स्वागत। आज आम देखा तरुण गोयल जनरल नॉलेज बुक पार्ट नंबर 71 अर्थनीति बा इकोनॉमिक्स बहिर संपूर्ण सारा सेवा परीक्षा टॉपिक प्रश्न पड़ुची से आम डिस्कसन करवा। आज आम देखा इकोनॉमी सर्वे उपरे। इकोनॉमी सर्वे की हाइलाइट्स कौन? जीडीपी एंड ग्रोथ आउटलुक। Real GDP growth estimate at 6.4% for financial year 2025. Projected GDP growth for financial year 2026 is between 6.3% to 6.8%. Focus remains on the balancing growth with macroeconomic stability. Sectoral performance. Services sector. Strong growth and major contributor to GDP. Agriculture होची resilient contribution around 16% of the GDP. तापर manufacturing growth remains muted due to the global headwinds. Emphasis on AI, digitalization and tech-driven productivity. Banking and financial sector. Gross NPA माने non-performing assets are multi-year lows around 2.6% in some segments. Financial inclusion index improved around 64.2 and capital market mobilization increased around 5% year on year. Okay, next. External sector FDI inflows rose around 18%. USD 55.6 billion April to November financial year 25 रे. Current account deficit जोटा कि CAD manageable, okay, around 1.2% of GDP. Forex reserve strong, कहते हैं around $640 billion, covering 11 months of imports. Around 11 months of imports. Temper inflation and cost pressure. Retail inflation moderated to around 4.9% from 5.4% in financial year 2024. High electricity cost is some states noted as a challenge for industry. Okay, next. Infrastructure and energy. Infrastructure investment grew around 38.8% over 4 years. Non-fossil fuel electricity capacity reached around 46.8%. Strong emphasis on climate goal and energy transition. जदि आपको कंटेंट भल लगे निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करूँ। ओपीसीएस जदि आपको स्टडी बुक दरकार कि आपको जदि स्मार्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन दरकार आपण मैंने डिटेल्स पढ़ी आपण मैंने क्यूआर कोड स्कैन करेंगे। ओएसएससी और ट्रिपल एसएससी जदि आपको किसी बुक दरकार आपण डिटेल पढ़ी स्कैन करके ये बुक नहीं पारे। स्टिल किसी प्रॉब्लम होची एई आपण जो वीडियो चलची या तले गोटे कमेंट सेक्शन अच्छी से मैंने पाइपर सब ई बुक लिंक। ओके, बाकी रहा जदि स्टिल किसी असुविधा अच्छे 9937193244 नंबर मत व्हाट्सएप करेंगे। Agriculture and allied sector. Horticulture, livestock and fishery is growing faster than crop farming. Fisheries CAGR around 8.7%, livestock around 8%, increased MSP for key crops, example होची अरहर 59%, बाजरा 77%. Employment and inequality. Employment rate dropped to 3.2% from 6.0% in 17 to 18. Inequality indicator Gini coefficient shows improvement both rural and urban areas. Strategic focus area reform. Push for deregulation to enhance competitiveness. Encouraging private partnership in infrastructure projects. Stress on improving productivity via AI and digital tech. Needs to reduce cost of doing business, or example power and logistics.
Challenges कौन अछि? Weak global demand affecting export and manufacturing. High state level power tariffs may hinder competitiveness. Climate risk, commodity volatility. Then geopolitical tensions remain external threats. Private investment needs to peace pick up pace to sustain infrastructure momentum. Okay, यहाँ पढ़िले ताको आमे समरी करनवा. GDP growth केते 6.4% financial year 2025 projected 6.0 6.8 ହେଇଛି financial year 2025. Macro focus कोन growth with macroeconomic stability. Services sector कोन strong contributor to GDP. Manufacturing कोन weak due to global demand, infrastructure and reform as support. Agriculture कोन around 16% of GDP, strong subsector livestock, horticulture, fishery. Financial sector NPA non-performing assets actually down 2.6%. Financial inclusion index at 64.2. Capital market up to 5%. FDI inflow कौन है USD 55.6 billion approx approx केते ना आपनको around 18%. ओके एटा अप्रैल टू नवंबर फाइनेंशियल ईयर केते थिला. Current account deficit around 1.2% of the GDP. Forex reserve around 640 billion in US dollar. Cover 11 months of the imports. Tapre inflation, retail rate inflation down to 4.9%. Then power cost high in some states flagged as industrial concern. Infrastructure investment up to 38.8%. Then renewable energy, non-fossil fuel capacity around 46.8% of total. Employment, unemployment rate at 3.2%, down from 6.0% in 17-18. Inequality, Gini coefficient improved rural and urban. Tech and innovation, AI digitization seen as a key future growth drivers. Policy focus, deregulation, cost reduction, private sector investment, productivity enhancement. MSP increases, AHAR around 59%, budget around 77% over cost. Key risk on global shutdown, commodity prices, climate change and private investment gaps. पहले ये टोटल समरी में कोई देली. नेक्स्ट बिजनेस हेल्पलाइन चैनल जदि भल लाଗୁଛି निश्चय लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु. बाकी रहला आपण जदि OPCS रो जदि स्टडी बुक दरकार कि स्मार्ट पार्ट डिस्कशन दरकार ताला आपण माने एटी डिटेल्स पढी के क्यूआर कोड स्कैन कर परिबे. स्टिल जदि आपण को OSSC OSSC पे दरकार आपण डिटेल्स पढी के क्यूआर कोड स्कैन कर परिबे. आ जदि किछि असुविधा हला ताले ए वीडियो जो देखुछन ता तळ गोटे कमेंट सेक्शन अछि सेठी आपण माने ए सब ई बुक रो लिंक पाइबे. डायरेक्ट क्लिक करके आपण पाइ परिबे. स्टिल किछि असुविधा हला 993719 नंबर सब बेले ओपन रही आपण माने सेठी मेसेज कर परिबे. ओके आज वीडियो एतिक. थैंक यू सो मच.